Dear student, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arafat mujeeb from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter number 4. Chapter is reproduction in animals. It is 8th class science, and in this chapter let us will have discussion about metamorphosis in frog. That is like where in a life cycle of the frog there take place a metamorphosis. And another topic is the cloning क्या होता है. Let us we start this is the last lecture of this chapter. And now we discuss the concept of metamorphosis takes place. It is the, we can say metamorphosis, it is an indirect development in an adult. It is an indirect development in an adult that we can study this metamorphosis as is ये क्या है, ये indirect development होती है जब भी एक offspring after hatching from the egg and develops into an adult. There are some intermediate stages in his life cycle which he completes, that when it takes birth from the egg, then it does not look like the parents. It has some dissimilarity in his morphology. Then that is known as the indirect development to reach to the adult stage, and then it looks like the parents, and this is known as indirect development in an adult. And if we studied this when we studied the life cycle in frog, when we studied the life cycle in frog, and they have their different stages. एक तो metamorphosis जो होता है ये उन मतलब insects में होता रहता है, in the insect, in the reptiles, खास तौर और amphibians like the toads and frogs. हमने देखा इन मेटामॉर्फोसिस में, अगर हम इस टर्म पे जाएंगे, मेटा मीन्स टू चेंज, टू ध्यान दीजिए यहाँ पे बेटा, टू चेंज, मेटा होता है टू चेंज, मेटा, एंड मॉर्फोसिस हियर मीन्स द concept of morphosis means morphology means external appearance, external that means external जो surface होता है उसमें change आती है, meta to change the external appearance. As we see in the frog, it has a life cycle when the female frog lays egg in thousands in number. Then in the water bodies, then there is a hatching in egg develops, then there is a hatching. In the hatching there is a formation of the young ones are known as the tadpoles. That means metamorphosis उन organisms में होते हैं जिनमें larvae stage होता है. Important to mention here, हमने देखा, हाँ, of course in the life cycle of the frog there is the larvae stage, larval stages. When they have the larvae stages, then there is the metamorphosis. Metamorphosis means there is changes in the external appearances when the organisms start its life by hatching out of the egg and then undergoes a number of stages. They changes in physical appearance, they changes in external appearance in the larvae stages, larvae 1, larvae 2, larvae 3, larvae 4, larvae 5, etc. stages. As you have seen as you have studied about the metamorphosis in the butterflies, as they have also the larvae stage, as how the intermediate organisms, I mean say larvae, how they look like the different from their parents, from the adult. How this morphology takes place in an adult, let us we have a discussion about it. Metamorphosis आप समझ में आया आपको ये टर्म क्या होता है. मतलब यहाँ हम इस मेटामॉर्फोसिस लाइफ साइकिल इन फ्रॉग
and we apply the concept of metamorphosis concept. Now in the life cycle, you say that when the female adult frog lay eggs, when she lay eggs in the water bodies, she lay number of eggs, then these eggs hatch. There is a hatching, there is a hatching, there is hatching process, and the hatching, there is a hatching, then there is a formation of the, we can say, the early tadpole. Early tadpole undergoes to the, it gives the formation of the number of tadpoles. late 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 tadpole, then जो late tadpole है, it develops into the adult, we can say adult frog. Then this adult frog, when it adult frog male, or it can be female, and they again go for the, this is the next generation, they undergo for the mating, for the copulation. When there is a mating, then she also, the female frog lays the egg. Here is the, we can say, the female frog. So this is the life cycle of the frog, and in this life cycle there is a concept of the metamorphosis. What type of change? Here is the number of eggs. I will say here the number of eggs are in the water bodies, and there are number of eggs in the water bodies, and these number of eggs develop into the tadpole. It look like this. It look like this. It is a tadpole here, and eye. There is a mouth here, and there is the, in the tadpole, you can see in the early tadpole there is the head bear, eyes, mouth, in the on the ventral surface it has a mouth, and there is a tail without limbs. It look like the fish. ये fish, it is the early tadpole. आप इसका morphology देखिए आप किस तरह का. It has a tail for the, it is for the swimming purpose. It has aquatic mode of life. Then later tadpole में हमने देखा है, it has head. Now it has its little tail associated with. Then there is the hind limbs there. They have the present. If it is the tail, now it develops. Now this just develops. Now this frog develops. Then here it develops. Here it is the eye, it is the mouth. It develops here the limbs. It develops here the hind limbs. Now change take place from this to this. It is first, it is second. Then in the late tadpole there is also the formation of, again this is the frog. Again we can see it is a frog here. It settle there is the, then it develops the four limbs, hind limbs. Also there is the development of four limbs. इसमें four limbs develop होता है इस frog में. There is also the attachment of a tail. Then हम देखते हैं that there are the four limbs. Also four limbs appears. Four limbs appear. It is the third. Then in the adult frog, it is the tail reduces and the limbs then highly develops. Four limbs, hind limbs develops. Then its mouth becomes dorsoventrally. इससे पहले इसका जो tadpole stage में mouth है, they are the front surface, the ventral view has a front surface में, मतलब माउथ इसका सीधा पेट की जगह से होती है. तो यहाँ पे ये सेंटर में अब माउथ डेवलप करता है. दिस फ्रॉग डेवलप द माउथ इन द सेंटर हियर. नाउ इट हैज द आईज. नाउ this tail here reduces in the adult. This tail reduces. Now this look like the frog here. It looks the frog here with the limbs, and it has limbs. We can say it has the limbs. Now it has with limbs. That means it is a metamorphosis. Certain changes take place in the larvae. It is the larvae tadpole. It is the, we can say it is the larvae first. Then it is the larvae second. Then it is the then I make the larvae third here, and then it develops into the adult frog. हमने देखा कि जो frog, it belongs to the amphibia. It is an amphibian. Also it is seen in the insects like butterfly, like the moth, silk moth maybe. Other example in metamorphosis की बात हम कर लेंगे.
जिसमें एक मॉर्फोलॉजी जो है एक्सटर्नल फिजिकल, देयर इज एक्सटर्नल फिजिकल चेंजेस, जिसमें हम बॉडी पार्ट्स में चेंज बदलाव आती है on stages when it has a number of stages are there. It can be 4 stages, it can be 5 in number, it can be 7, 8, 10, 12 in stages in number. Then there is an external physical changes seen in the metamorphosis, as we talk about the various insects like the butterfly like we can see it in the butterfly, like in the silk moth में, या हम बात कर लेंगे इनमें, अभी हम बात कर रहे थे एम्फीबियंस लाइक द फ्रॉग, इट इज इन योर सिलेबस, फ्रॉग, टोड्स, उनमें क्या होता है, उनमें भी ये देखा जाता है, दे हैव द मेटामॉर्फोसिस। हमने देखा मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इज कंट्रोल्ड बाय द थायराइड, याद रखिए थायराइड ग्लैंड. This thyroid gland is present in a frog. It is also present, this type of endocrine gland, in our body, in the thoracic cavity, upper part of the thoracic cavity. It is also present in us. Also, it is seen, this thyroid gland in frog. What it changes? It brings these external. Actually, इसी के कारण जो thyroid gland है, इससे निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स तो निकलते हैं, वही that brings us external physical changes. If we talk about the amphibians, there is the change that is there, and the concept is known as the metamorphosis. आपको कि सर अगर हम बात कर लेंगे hen की बात हम कर लेंगे, and birds, other birds, they are the egg, they also lay eggs, but they don't have the metamorphosis. The egg hatch, there is a hatching, and there is the adult, and adult resembles to their parents, ये resemble होता है. तो इनमें हम देखते हैं there is a direct development. metamorphosis होते हैं insects में, जिनमें indirect development होता है. So therefore we can say the birds and ये these eggs. Yeah, we talk about the reptiles की बात हम कर लेंगे, जिनमें snakes आते हैं, lizards. तो उनमें अगर हम देखेंगे, या 1 या 2, इनमें भी अगर हम देखेंगे hen birds, other birds, reptiles, snakes, lizards. Also there is the we can say there is the direct development. There is no metamorphosis, there is direct development. Due to the direct development, when there is hatching, when the young ones hatch out of the egg, it directly resembles, it becomes adult, and this adult directly resembles with their parents. ये parents morphology से resemble करते हैं. There is no differentiation. Metamorphosis is an incomplete development seen in the majority in the insects, in the अभी मैंने कहा amphibian like frog, toad, उसमें हमने ये देखा है indirect development. This is all about the metamorphosis. As the metamorphosis in frog, जिसमें life cycle होता है, life cycle चलाने के लिए it undergoes number of processes, number of stages, and there are some intermediate organisms which don't resemble with the parents, and they look like somewhat different, and it is incomplete development. And one of the gland known as the, अभी मैंने mention किया बोर्ड पे भी, thyroid gland, which secretes the hormones thyroxine, triiodothyroxine, tetraiodothyroxine hormones. They bring us a change in the tissues, their target organs or the tissues which where the hormones function and brings changes in the tissues. Some tissues it retards some एक कुछ हार्मोन thyroxine हार्मोन कुछ tissues
टिश्यूज को रिड्यूस करता है उनको, जैसे कि टेल। अभी तो एडल्ट फ्रॉग में क्या हुआ, वो फ्रॉग में, एडल्ट फ्रॉग में उसने टेल अपनी रिड्यूस की है, तो 4 लिम्ब्स क्या हो गई, डेवलप। हिंड लिम्ब्स क्या उसने डेवलप किए। तो हेड पार्ट, माउथ पार्ट में भी चेंज आने लगी, माउथ पार्ट में, हेड पार्ट में चेंज आने लगी। इट लुक्स लाइक द एडल्ट फ्रॉग बिकॉज ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन्स विच इज फंक्शन is on the target tissues. Where there is a change in target tissues, there is the change in the external morphology in the frog. It is all about the uh, also you can see in the silk moth there is the egg. When there is a hatching, there is the formation of the caterpillars, and their caterpillars undergo the pupa undergo, pupas are the different larvae stages. Then this pupa undergoes, it can then again undergoes change and then take place. It changes into the adult female moth, adult male moth. It changes into the, it is known as the metamorphosis. तो मेटामॉर्फोसिस खासतौर हमने उनमें देखा गया है विच आर ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स। ओविपेरस होता है एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स, एक्सेप्ट बर्ड्स, एक्सेप्ट द रेप्टाइल्स, एक्सेप्ट द फिशेस, उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इंसेक्ट्स आर द ओविपेरस, that amphibian frog are the oviparous, they are egg laying animals। इनमें देखा जाता है there is the concept of metamorphosis, there is a physical change takes place in them. Now is the here other concept of the cloning। cloning में आपने नाम सुना होगा डॉली, जो है डॉली। तो क्लोनिंग क्या होता है, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है क्लोनिंग। क्लोनिंग हम क्या करते हैं, we make exact copy of exact, that means make a production of exact copy of cells. So cloning sometimes it is known as the, it is one of the asexual way of reproduction, asexual way of reproduction। क्लोनिंग में याद रखिए और एक चीज आप इसमें मतलब प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल्स is we can say it is the asexual mean of reproduction। yes of course अभी आपको पता चलेगा how it is। number third, there is no involvement of sex cells, that is that there is no fusion between the sperms and eggs, ova, huh? Sperms are produced by male, eggs are produced by female. There is no mating here. We can say here is no mating, no fertilization। यहाँ वो concept fertilization here in this। then of course here is no zygote formation, no मैंने लिखा no zygote formation in cloning। क्लोनिंग में एसेक्सुअल मीन कुछ भी नहीं है, ये तो एक सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो क्लोनिंग में क्या करते हैं, वी गिव द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल्स, वी prefer, we choose a specific type of cells, then we recombine them। there is somewhat अभी यहाँ पे ये क्लोनिंग, फर्स्ट जो क्लोनिंग है, this cloning was successfully performed by the Lan Wilmot, it was and his colleagues at कहाँ पे इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन में ये परफॉर्म किया है, दैट इज नोन एज Roslin Institute, Edinburgh, that is Edinburgh, Scotland। they performed this experiment cloning this person Van Wilmot was the person first time performed the cloning, and because of the cloning there is a formation of intermediate organism, that is the dolly, it is a sheep। how they performed
we can say they performed a unique experiment in by giving the birth of the dolly. How they performed the experiment, Wilmot and his colleagues at the Roslin Institute of Edinburgh, Scotland. तो डॉली जो है इसकी बर्थ जो हुई है as per mentioned in the book 5th July. Dolly got she took the birth 5th July 1996 की बात है. She took the birth. तो बर्थ कहाँ से लिया उसने how Dolly's existence takes place. Here is the one of the sheep, उसको हम कहते हैं, that is the Fin Dorset sheep. Other is the it is the ram, and other is the Scottish blackface ewe. She is the female. ewe. तो भी तो इसको कहते हैं ewe. Female, and it is the ram, it is male. हमने क्या किया, दो हमने लाया. यहाँ से इसका जो मेमोरी ग्लैंड है, it is milli gland, we can say mammary gland or the milli gland. Mammary gland, हमने मेमोरी ग्लैंड से कुछ टिश्यूज लिए हैं, कुछ टिश्यू सेल्स लिए हैं. मेमोरी ग्लैंड से हमने मेमोरी ग्लैंड सेल्स लिए हैं. मिली ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड सेल्स, इससे हमने मेमोरी ग्लैंड सेल्स लिए हैं. और इससे क्या लिए हमने, इससे सीधा हमने एग्स लिए हैं, जो एग वो प्रोड्यूस करती है. वी टेक द एग एंड हमने क्या किया, और इनसे ही क्या डेवलप हुआ है, इनसे ही एक इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज डॉली. इनसे ही हमने इनसे ही डॉली ने जन्म लिया है. इसके पेरेंट्स है, इट इज फर्स्ट, इट इज सेकंड पेरेंट ऑफ द डॉली. दो पेरेंट्स. हमने क्या किया, जो मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड से हमने कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ हमने ग्लैंड सेल्स लिए हैं. इसका ग्लैंड सेल्स का जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है वो हमने चूज द न्यूक्लियस ऑफ द ग्लैंड सेल्स, चूज्ड, पूरा ध्यान दीजिए, वो चूज्ड द न्यूक्लियस ऑफ दीज ग्लैंड सेल्स. और इस एग का जो हमने न्यूक्लियस है वो हमने रिमूव्ड आउट. तो अब यहाँ एग रह गया विदाउट, शाबाश, पूरा ध्यान दे, विदाउट क्या रहे, विदाउट न्यूक्लियस. यू नो दैट न्यूक्लियस इज contains the genetic material. अब इस what are then these eggs, there are the egg, and the egg is without genetic material, that means without nucleus. इसका अपना न्यूक्लियस हमने निकाला. अब खाली इसका सेल को रहने दिया, बट न्यूक्लियस, ये मान लीजिए इसका सेल है, हमने इसका जो ये न्यूक्लियस है इसको बाहर निकाला, ये बाहर निकाला, मान लीजिए ये बाहर निकाला. तो सेल को हमने से न्यूक्लियस को बाहर निकाला. तो इस न्यूक्लियस को मान लीजिए यहाँ पे ये एग है, इस एग को हमने, यहाँ पे ये एग है, इस एग का जो न्यूक्लियस है वो हमने रिमूव आउट किया. तो जब हमने इस एग को रिमूव आउट किया तो हमने इसका एग, मतलब इसमें इसका जो अब इसका न्यूक्लियस नहीं रहा, इससे यहाँ से निकाला हमने, इन सेल्स से हमने न्यूक्लियस को रिमूव आउट किया, इसी का चूज न्यूक्लियस. तो हमने इसमें इसको एम्बेड किया, तो इसमें ये न्यूक्लियस लगा. इट इज फर्स्ट, इट इज यहाँ पे गो. इसका बाकी ये जो एग है, नाउ इट इज ओन सेल, बट द न्यूक्लियस इज ऑफ जस्ट फिन डॉर्सेट शीप का न्यूक्लियस है. दैट मीन जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो खाली इसका होगा, इसका ही कंट्रीब्यूशन होगा, इसी के कैरेक्टर्स डेवलप होंगे. ये अपने कैरेक्टर्स डेवलप नहीं करेंगे, खाली ये इस न्यूक्लियस का मतलब जो जेनेटिक मटेरियल, रेप्लिकेशन, देन अदर प्रोसेस टेक्स प्लेस एंड नरिशमेंट ऑफ द सेल टेक्स प्लेस. फिर हमने ये एग लिया है,
इसको हमने इस एग को, जो एग है, नाउ इट इज एग, मगर किसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है फिन डॉर्सल शीप का सेल तो अपनी है, इसका ब्लैक शीप, ब्लैक फेस एवी का जो न्यूक्लियस सेल है वो अपने है, बट न्यूक्लियस इज ऑफ द फिन डॉर्सल। तो हमने इसके बॉडी में एंटर किया, मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इसको डाला, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इसमें डाला, तो यूटीरस में इसकी क्या हो गई है, डेवलपमेंट। नाउ दे आर इंसर्टेड इनटू द बॉडी ऑफ द सिकोटिस ब्लैक फेस एव। So then what later on then there is a development, then this cell successfully developed in the reproductive part of the black face, this AV, that then they take place here. Now in this way there is a successfully development of, then there is a, for by this she gives the birth, then she gives, when there is a proper development of egg in her reproductive tract in the uterus, there is successfully developed, then there take place the birth of the dolly. तो क्या है, यहाँ जो डॉली प्रोड्यूस हो गई है विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम क्लोनिंग। तो ये कहानी थी डॉली की, किस तरह हमने दो अलग अलग, हमने बेड और मतलब शीप यहाँ हमने लाए, फिन डॉर्सेट का और स्कॉटिश ब्लैक फेस जो फीमेल है, किस तरह इनमें हमने क्रॉस परफॉर्म किया है, किस तरह एक प्रोसीजर यहाँ डेवलप किया गया है। इट इज़ अ न्यू टेक्निक in the bioscience, in the scientific research, then with the help of cloning, then after they perform this cloning, we developed many organisms, and they but unfortunately they died before taking their birth. After taking their birth they died, but it is the technique, we are improving, science or improving, research is going on the successful of the performing the cloning process. Here the जो डॉली है, it look like the it exactly look like the fin dorsal shape, ये अपने बाप पे गई है, it is male, it is a male ram, तो ये अपने बिल्कुल बाप पे गई है। इसकी जो फीचर्स है बिल्कुल she resemble तो हर फिन डॉर्सेट शीप, अपने इसके जो फीचर्स थे, जेनेटिक फीचर्स थे, फिजिकल फीचर्स थे, वो रिजेंबल इसने इससे किया है फिन डॉर्सेट। दैट मींस शी gave the later on birth and is the her mother, and she look like exactly to his father. Also the dolly then gives the birth, she successfully sustained life, उसने अपने sustained life and give other, and she give birth to other young ones, and इसने खुद जन्म दिए बाकी species की, give birth to other young ones, other young ones, याद रखिए। she also survived for various years, तो इसने नॉर्मल या मतलब नॉर्मल लाइफ गुजारी, डॉली ने नॉर्मल लाइफ गुजारी और जन्म दिए हैं बहुत सारे यंग वंस से। अब इसने कैसे वो जन्म दिए, व्हेन शी सक्सेसफुली सस्टेन्ड लाइफ बाय द she show the sexual reproduction by means of just by mating with other organism, by sexual means she gives the birth to the young ones, तो इसने भी बच्चे देना पैदा किया। तो and Dolly when it develops the character of his father like बिल्कुल resemble हो गए, तो but unfortunately जो डॉली है it died, मर गई है due to lungs infection, इसमें लंग्स इन्फेक्शन, लंग्स डिजीज डेवलप हो गई, इसमें लंग्स डिजीज डेवलप हो गई है, तो देन शी डाइड एंड द डेट इज 14th Feb
Feb 2003 में वो मर गई. The Dolly, which was the cloned, Dolly was the cloned organisms as the performed experiment by the Wilmot in his research lab. Then बहुत सारे मैमल्स ऐसे हैं जो क्लोनड थे, तो उन्होंने डेवलप किए हैं. हमने ये देखा कि सक्सेसफुल प्रोसेस नहीं रहा है. बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ के साथ वो डेवलप हुए, वो पैदा हो गई. बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ के साथ, बहुत सारे ऑर्गन इन्फेक्शंस के साथ वो डेवलप हुए, या मैंने अभी बताया कुछ मर गए जन्म होने से पहले या जन्म होने के बाद अपने मदर से वो मर गए. तो आफ्टर सर्वाइव फॉर few weeks, few days, then they died. Then here research is going on and we are improving the method of cloning at the cloned organism. The Dolly is a cloned organism, as how she took the birth and without the sexual mating, इनमें sexual mating नहीं. इसने मैंने बताया कि किस तरह हमने यहाँ इस मेमोरी ग्लैंड के सेल्स निकाल के उसका न्यूक्लियस, फिर इसका एग निकाल के, एग जो हमने कलेक्ट किया है उससे वो उस एग का जो न्यूक्लियस अपना है वो हमने रिमूव किया. इसका जो न्यूक्लियस है मेमोरी ग्लैंड सेल्स का न्यूक्लियस, वो इसमें डाला. तो डॉली ने अपने बाप के जेनेटिक कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं. शी सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस यंग वन, शी सस्टेन्ड लाइफ, इसने लाइफ गुजारी और इसकी डेथ अनफॉर्चुनेटली हुई है 14 Feb 2003 में. ये थी कहानी डॉली की जो क्लोनड ऑर्गेनिज्म थी. तो इसके साथ हमने ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट किया है. तो फिर आप अपने नोट्स पे इसको रिवाइज करिए और मेरे वीडियो जो उन पे बार बार रिपीटेडली उनको वॉच करिए टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. थैंक यू.